నేషనల్ హెరాల్డ్ ఇష్యూతో లోక్సభ గందరగోళంగా మారింది. విపక్ష సభ్యులను భయపెట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం అక్రమ కేసులు బనాయిస్తోందని ఆరోపించారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ ఖర్గే. బీజేపీ ఎంపీలు ముఖ్యమంత్రులపై ఎన్ని ఆరోపణలు వచ్చినా పట్టించుకోని సర్కార్ అపోజిషన్ పార్టీలపై అమానుషంగా వ్యవహరిస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు. కాంగ్రెస్ నేతలపై కేసులు పెట్టే ముందు వీకే సింగ్ వ్యవహారంపై సమాధానం చెప్పాలన్నారు. దీంతో అధికార విపక్షాల మధ్య కొద్దిసేపు మాటల యుద్ధం నడిచింది. ఖర్గే కామెంట్స్ కు స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు కేంద్ర మంత్రి వెంకయ్యనాయుడు. యూపీఏ ప్రభుత్వ హయాంలోనే బీజేపీ నేతలపై అక్రమ కేసులు పెట్టారని ఆరోపించారు. ఫ్రస్ట్రేషన్తోనే సభలో ఆందోళన చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రజల ఆలోచనలకు అనుగుణంగానే కేంద్ర ప్రభుత్వం పనిచేస్తోందని వివరణ ఇచ్చారు. इस देश में कैसे दो अलग अलग कानून है, एक रूलिंग पार्टी के लिए उनके लिए और दूसरा जो गुजरात में विरोधी पक्ष के नेता है शंकर सिंह वाघेला के घर पे रेड होता है। यहाँ पर शिवराज सिंह घोटाला करते हैं उनके घर पे, या उनको आज तक इंक्वायरी नहीं की गई। उसी ढंग से आप हिमाचल प्रदेश में वहां पर शादी हो रही है, शादी चल रही है, डोली जा रही है, उस वक्त सीबीआई का रेड होता है, कुछ भी नहीं मिला तो फिर उसके बाद में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाके डिस्प्रोपोर्शनेट के लिए उनको फंसा देती है। और खास करके ये जो सताया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को, और जो लोग निष्ठावंत है, प्रामाणिक है, उनको डराने के लिए, उनको दबाने के लिए और उनके आवाज को दबाने के लिए ये पूरी कोशिश हो रही। अगर आप दबा के हमारे आवाज को बंद करना चाहते हैं, कभी नहीं होगा और उसको होने भी नहीं। आप ऐसा डरा नहीं सकते। तो सीबीआई केस डालकर एनफोर्समेंट डायरेक्टर को भेजकर रेड कराकर अगर विपक्ष को डराना चाहते हैं तो कोई विपक्ष यहाँ डरता नहीं है और कोई जुडिशरी की बात यहाँ पर नहीं है। आपकी नीयत जो है, आपकी जो नीयत है, आपके नियत के खिलाफ हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आप जो दमन की नीति अपना रहे उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको मालूम है वीके सिंह के बारे में यहाँ पर पूछा, उन्होंने दलितों को कुत्ते के समान उन्होंने कहा। कुत्ते को अगर पत्थर मारते हैं, कुत्ते को अगर पत्थर मारते हैं, क्या उसका भी जवाब देना? उन्होंने ये कहा। कोई कहता है दलितों को कुत्ते के साथ, कोई अगर मुजफ्फरनगर में दंगा होता है, दंगे वालों के साथ जो वहां पर मर्डर किए उनके साथ जाते हैं। तो इसीलिए हमारा प्रोटेस्ट हो रहा है और हमारे बातों को एक्सपेंस किया जाता है, ये भी नहीं होना चाहिए। मैडम, जो हमारे बातों को एक्सपेंस किया जाता है ये होना नहीं चाहिए। He wants that he wants to treat no citizens of this country like dogs only. He has no respect. A man who has no respect for the constitution, who has no respect for the weaker section, he has no right to stay in the government. He should be dropped. He should be dropped. He should be dismissed. जनादेश को स्वीकार करे। कांग्रेस पार्टी is not ready to digest the mandate of the people. They don't want the parliament to run. They don't want progressive registration to be made. They don't want important people's oriented registration. They are thinking they are obstructing Narendra Modi. They are obstructing the progress of the country. They are obstructing the welfare of the people. They should understand that they were in power for 50 years. They cannot go on making sweeping allegations. Mr. VK Singh case has gone to the court. Court has categorically said no such thing happened. Again and again, they are taking the name of Dalit, they are taking the name of कुत्ते। सदन में वो खुद आरोप कर रहे, सदन में वो ऐसा भाषा प्रयोग करना कहां तक उचित है? कोर्ट ने खारिज कर दिया, कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपने देखा मैडम, जो कल का जो प्रोवोकेशन क्या था, हमने सोचा खरगे जी बताएंगे कल प्रोवोकेशन क्या था। कोई नोटिस नहीं दिया, आपसे बातचीत किया नहीं, आपको भी बताया नहीं, हमको भी बताया नहीं, उनको भी मालूम नहीं है वो क्यों हंगामा कर रहे, उनको भी मालूम नहीं। हंगामा किया, सदन चलने नहीं दिया, और सूखा के संदर्भ में पूरा सदन सूखा के बारे में चर्चा करना चाहते थे, इन लोगों ने चर्चा नहीं करने दिया। ये कहां तक सही है? ये लोकतंत्र है क्या? इज इट डेमोक्रेसी? इन व्हाट वे द गवर्नमेंट इज इन्वॉल्व्ड इन यस्टरडेज एपिसोड of the newspaper? It is their problem. This case was registered during their time.
In 2012, it was UPA which was the government. In 2013, it was UPA as the government, not the BJP or NDA. So let them not mislead the country. The entire country is asking why Congress is coming to the well of the house. They have no reason. They have no answer. So they are already frustrated. They are not ready to respect the mandate of the people. Government is ready to discuss any issue. We have nothing to hide. Our government have not done anything wrong. None of my ministers have done anything wrong. They are doing an excellent job. All the ministers are doing an excellent job. We are proud of our ministers. We are proud of our ministers. The Prime Minister is steadfast in taking the country forward. That being the case, this is the tolerance. This is the तानाशाही. देखिए 500 लोग बैठे शांत में और 30 लोग हंगामा कर रहे हैं, सदन को नहीं चलने दे रहे। ये क्या लोकतंत्र है? क्या सिखा रहे हैं लोग? क्या प्रवचन दे रहे हैं पूरा देशवासियों को? मैं देशवासियों से विनती कर रहा हूँ, देखिए क्या हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो चुनाव में हार गए, हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो आप लोगों ने आदेश दिया जनादेश मोदी जी के पक्ष में, उसको ये लोग फेल करना चाहते हैं। They want to fail democracy. They want to fail the parliament. They want to fail the government. This will not happen. We are steadfast. We will do whatever is interested in the interest of the people. The government will do it. I only ask them, please understand, realize, respect the mandate of the people.